Assalamu alaikum. This is Usma Hafiz. Welcome to all of you in my session. Today I am having a very amazing and versatile guest with her commendable works, and I want to introduce her. She has been ranked among the top 10 female coaches in 2021 by Yahoo Finance. She is the founder of Carousel Moms Business and Leadership Coaching. Besides being a business and leadership coach, she is an international speaker and mentor. Along with a 9 to 5 job, she is also a homemaker, coordinator, master's catechist, volunteer, counselor, and psychotherapist and hypnotherapist. She is a certified master's and she's also providing personalized and group counseling to families, adults, and teens. She also works with companies to overcome disruptive leadership within organization. And according to her, the power is within you. Break free from what is holding you back. She is a great inspiration for other women. So let's welcome our guest, Daphne Source. Thank you so much for joining me, for giving us your precious time. I have given you a brief introduction. So अगर कुछ कमी रह गई है तो काइंडली हमें बता दें अपने बारे में। आप कहाँ से बिलोंग करती हैं और नाउ वेयर यू आर सेटल्ड दीज डेज। Sure. Thank you, Uzma, for the warm welcome. आपने तो basically majority of the introduction तो आपने करवा ही दिया. So just to share a bit, जैसे हमने कहा कि origin कहाँ से है और कहाँ रहती हूँ. मैं दुबई में रहती हूँ अपनी फैमिली के साथ. मेरे 2 बच्चे हैं. मैं ओरिजिनली मेरी पैदाइश क्वेटा बलूचिस्तान में हुई थी और फिर उसके बाद हम लोग कराची सिंध में मूव हम लोग ने किया बिकॉज वालिद साहब के ट्रांसफ़र हुई थी. तो बस हम लोग वहाँ पे थे जब तक शादी हुई. फिर शादी के बाद हस्बैंड को जॉब मिला एंड देन आई वाज द लकी ब्राइड कि जैसे शादी हुई 1 महीने बाद फिर उसको जॉब मिल गई दुबई में और फिर वो पहले आए फिर आफ्टर दैट वी फॉलोड एंड जॉइंड हिम. So over to you, Uzma. हाँ जी, थैंक यू सो मच। आज जो हम जिस टॉपिक पे डेफने से बात करने जा रहे हैं और उनसे हम लर्न करने जा रहे हैं, दैट इज वुमेन वर्क एंड विल टू लीड. Actually, this topic is a title of the book that was written by Sheryl Berg. She's a chief coordinator Facebook. So आज हमने ये टॉपिक सिलेक्ट किया है कि हमारी इतनी बड़ी तादाद फीमेल्स की, एज यू नो कि हम अच्छी खासी तादाद में हैं, लेकिन लीडरशिप और एग्जेक्टिव पोजीशन में हम फीमेल्स को देखते हैं कि बहुत ही कम हैं. सो व्हाट डू यू थिंक दैट व्हाई वुमेन्स आर सो यू नो फ्यू इन लीडरशिप पोजीशंस? आपके ख्याल में क्या वो फैक्टर्स हैं? सबसे पहले तो लेडीज आर ऑलरेडी लीडर्स कि सब काम आई थिंक घर में लेडीज ही करती हैं, राइट? माँ हो या वैसे भी घर पे होती हैं तो डेफिनेटली दे आर ऑलरेडी इन लीडरशिप रोल्स. अगर औरत नहीं होगी घर में पता नहीं उस घर का क्या होगा. शी डज सो मच ऑलरेडी. उसका एक किस्म का लीडरशिप है एंड बिजनेस, क्योंकि घर में हमारे इतने डिपार्टमेंट्स होते हैं जहाँ पे औरत कपड़े धो रही है, बर्तन माज रही है, खाना पका रही है, बच्चों को देख रही है, उनको पढ़ा लिखाना, इधर उधर लेके जाना, निलाना भी. अगर बच्चा ज्यादा छोटा है, जब बच्चा बीमार होता है तो माँ रात रात जागती है. शी डजंट इवन ईट हर फूड बिकॉज ऑफ द सैक्रिफाइसेस फॉर द फैमिली. तो वो खुद ही एक बिजनेस वुमन है ही शुरू से एंड शी इज इन looking after so many departments. So she does have the leadership qualities. और ये मैं बताती चलो कि कोई भी जॉब जिसमें सैलरी मिलती है वो कभी 24 घंटे की नहीं होती है. बाकी माँ का जॉब वो होता है अनपेड 24/7. कोई छुट्टी नहीं होता, कोई फ्राइडे सैटरडे संडे रात दिन जो भी हो उसको काम करना पड़ता है with no support and no guidance or anything. So all she has to manage alone. Over to you, Isma. Isma, can you hear me? Hello.
This is a very good news for all of us that we are the leaders. ठीक है, ये जो हमने सोच लिया ना कि हम जो है वो घर के काम कर रहे हैं, तो हम जो हैं वो लीडर्स नहीं हैं जी. Yes, I can hear you. Hello, जी. am I audible now? Yes, you are. Go ahead. I can hear you, Uzma. Hello. हेलो जी उस्मा, आवाज आ रही है. हेलो जी, मेरी वॉइस आ रही है? जी. जी. जी, तो ये तो सबसे पहले सारे जो है ना फीमेल्स खुश हो जाएँ कि वी आर ऑलरेडी द लीडर्स एंड हमने ये जो घर सँभाले हुए हैं, तो ये कोई लीडरशिप पोज़ीशन से कम पोज़ीशन नहीं है. सो आई जस्ट वांट टू आस्क दैट आप जैसे एज़ यू जस्ट टोल्ड कि आप यू आर द मदर ऑफ 2 ब्यूटीफुल किड्स. सो आपने अपने जो है करियर को और मदरहुड को कैसे बैलेंस किया, इसके बारे में थोड़ा-सा बता दें? जरूर. सबसे पहले तो शुरू में हम लोग ने थोड़ा सा डिसाइड किया था, जैसे हम दुबई आए थे, सो इट्स नॉर्मली दैट हियर वी डोंट हैव एक्सटेंडेड फैमिलीज. रिश्तेदार कोई भी नहीं होता है, तो हम सिर्फ दोनों अकेले थे, जिसकी वजह से हम लोग नहीं चाह रहे थे कि किसी नौकरानी या मेड के साथ बच्चे को छोड़ें. तो आई did took the backslide, although I had a very good job पाकिस्तान में, a 9 to 5 job at a very senior post in the Aga Khan University, AD Marker and Sons, which makes the Winter Geno and Eurobion, and also it's Philips Electrical Company. I really had senior posts in that, but we took the decision that I would stay home and he would work, right? So that the children got the best attention. कि कहा जाता है ना कि बच्चा जो माँ से पलता है वो डिफरेंट ही होता है दूसरे बच्चों से, और ये जरूरी भी है. But this is a decision I think families need to take, but not कि भाई औरत का काम सिर्फ घर पे होना चाहिए और उसको काम नहीं करना चाहिए, right? But because हम लोग काम करते घर में होते या ऑफिस में होते, काम ही काम होता है, right? It is only that it's unpaid and it's paid job. So it's just a decision that the couple needs to make, that what they are doing and how they are doing it. And the thing is that people in the companies also at the same time, they don't give men leave, but some countries have started this, which is I think a very good initiative. One change already that I saw in Pakistan was that hospitals insist कि जब बच्चा पैदा हो रहा है, आदमी का होना वहां पे लाजमी है, because he needs to share that job, right? वो बच्चा उसका भी है, उसको पता भी तो चले कि meaning what we women are sacrificing, what we are going through. Because for a mother to give birth, she is literally meeting death. उसके लिए एक मौत और दूसरी जिंदगी होती है जब वो जन्म देती है अपने बच्चे को. और क्यों उस हस्बैंड को होना नहीं चाहिए वहां पे, या उसको कुछ पता ना चले या कुछ, इट इज नॉट फेयर एट ऑल विद द वुमन, right? And it is possible that they can create a balance between men and women. I do not know why, but men feel threatened with us women around because we have so much capabilities. It's more of what I see, a psychological thing that they've done on our mind. That you're the woman because you gave birth and you're with the child, you have to be home. औलाद दोनों के होते हैं, माँ और बाप. बाप सिर्फ शोपीस की तरह नहीं आ सकते, बस एक दिन के भाई ये मेरा बेटा और बेटी है, घर में होते नहीं है पूरे दिन, फिर शाम में भी वो या तो दोस्तों में जाते हैं या कोई और चीज होते. यू सी दैट एक माँ के लिए कभी ब्रेक होता नहीं है. उसका भी दिल करता है, वो भी इंसान है कि वो किसी अपनी पड़ोसी से बात करे या कहीं जाए और कुछ करे. सो वी मस्ट अंडरस्टैंड टू गिव द मदर द ब्रेक. क्योंकि जितना कोई भी गाड़ी भी आप देखिए, अगर चलाते 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 रहेंगे, एक दिन तो वो जली जाएगी, राइट? इट विल नॉट वर्क प्रॉपरली. सो इट्स इम्पोर्टेंट दैट वी रियली गिव दैट ब्रेक टू द मदर, ताकि वो बिल्कुल शी गेट्स री एनर्जाइज्ड and she can really be fresh and new and geared up to start. जब आप किसी ट्रैवल में जाते हो तो गाड़ी का भी सर्विसिंग आप लोग करते हो, और फिर जब गाड़ी रेडी होती है, पेट्रोल बराबर है, टायर्स आर ऑल गुड एंड ऑल, फिर आप हाईवे पे निकलते हो. माँ तो हर रोज ही हाईवे पे ही होती है, तो इट्स लाजिम है कि आप माँ को थोड़ा सा ब्रेक दें
और सपोर्ट करें, और डू नॉट फील थ्रेटेंड. वी women are not going to do anything to you all. We can definitely do much more. Okay. And when we come to gender equality, I think this is everywhere in society that the gender equality is not there. You see the very same job a woman can do, but she is labeled because you're a woman, you will not get. Plus, they do not give senior posts to women. Why aren't you giving? Why can't they do things? They want to do it, but you all don't open your doors to anything. Now when we look at gender equality, कि ठीक है, अगर आप कहते हो कि उसको अच्छा पोस्ट नहीं देंगे औरत को, तो वही आदमी के नीचे ही होना है, और आदमी को बड़ा पोस्ट देंगे, तो ये मैं आपसे पूछती हूँ कि जब हम लोग कुछ लेने जाते दुकान में, प्राइस सेम क्यों होती है? उस वक्त क्यों आप जेंडर इक्वालिटी करते हो, और जब कोई नौकरी करनी है तो देयर इज नो जेंडर इक्वालिटी. So make up your mind, what do you all want? If you all think that men are superior and women are not superior, then very clearly do the same, that when we go to the shops, the things should be at half a price and charge the men more money. How cool would that be? What do you think, Uzma? Are you there with us, Uzma? I'm not sure she can hear. Anyhow, let's move on. So the thing is that we have to. Bilkul, you are very much right that we should get out of this fear that we are less intelligent, we are less hardworking. Yes, can you hear me? Yes, I can. Go ahead, Uzma. Yes, I was saying that we should get out of this fear that we are less intelligent than the males. We are much more hard work, doing hard work. और इस चीज़ का fear हमें सिर्फ है कि हम जब भी किसी एक same post पे जाते हैं, that is for male and female, but हम salaries पे compromise कर जाते हैं हम females पे, that why we females are compromising on low salaries. जबकि उसी पोस्ट पे अगर किसी मेल की को जो है वो पोस्ट दी जाती है तो उसकी सैलरी एज कंपेयर टू फीमेल ज्यादा रखी जाती है. तो आप फीमेल्स को क्या जो है मशवरा देंगी कि दे शुड नॉट कंप्रोमाइज ऑन द लो सैलरीज, उनको अपनी कॉम्पिटेंसी अकॉर्डिंग टू देयर कॉम्पिटेंसी दे शुड स्पीक फॉर देयर सैलरीज. Yes, they should. And I would say it's not the problem with the women. The problem is basically with the companies and the men who are running the thing, that they don't want to give the opportunity to the women, right? And you see, even in offices, even if we have children or anything, we are managing everything. Whether it's the office work or the housework, we'll come home, we will cook also. So many working women I've seen, they'll go home, they'll start cooking immediately. रोटी सब कुछ रेडी होता है मियाँ के लिए, भाई दोनों जॉब पे गए थे, बल्कि फिर भी उसको भागना पड़ता है. मियाँ तो बोलेगा मेरे चप्पल लेकर आओ, मुझे खाना दो, मुझे भूख लग रही है, मैं थक चुका हूँ, टीवी भी लगा दो. क्या औरत एक इंसान नहीं है? It's the problem is that we women need to stand up for ourselves and be strong, that this is our commitment. But men, you also need to open the doors to us. Because not have your ego issues where you say that, okay, agar aapne kaam nahi karna hai, suppose the man can earn 50,000 और औरत को आप 25,000 दे रहे हैं, तो और एक औरत इसरार करती है तो आप कहते हो कि ठीक है, नहीं आ रहा है, नहीं आओ. ऐसा नहीं है, because you all are making a problem. Please remember that if you are in this world, you are because of your mother. Your mother is an aurat. Okay, I don't think anybody's mother is not an aurat or a female. You're born of a woman. Respect her, give her place, because she gave you place in herself and even in this world. So if you do not respect that, what God has created, I'm sorry to say, I have no words to say about you, Ben. It's a disappointment. Because if you cannot respect your mother that God has given you all, and God is above everything,
वी से कि हम लोग अल्लाह में को मानते हैं, हम दुआ कर रहे हैं, हम नमाज पढ़ते हैं, ला फला ढिमका। अगर सुनते हो तो उसी ने तो माँ बनाई है। You couldn't have been born without the blessings of God. So when a mother has given birth to you, has brought you into this world, you're born of a woman. Remember and respect all women. Sometimes it happens, what I've seen, even the problems in the workplace, if the work is given to a woman, in the workplace there is no respect, the men cannot behave themselves. Why? क्या आप लोगों के घरों में माँ बहन नहीं है? अगर आपको इतना बुरा लगता है कि अगर कोई आपके माँ बहन को कुछ कहेगा तो आप किस तरीके से कुछ कह रहे हैं जो लेडीज है आपके ऑफिस में? रिस्पेक्ट देम लाइक योर सिस्टर. रिस्पेक्ट इज ऑलवेज कमांडेड, नॉट डिमांडेड. अगर आप कहते हो कि मैं मर्द हूं और मेरी इज्जत करो, आपको इस तरीके से की इज्जत, आई डोंट नो. Gain your own respect, make the space, and I tell you, the cooperation जहां पे even मियाँ बीवी मिलके काम करते हैं, अंडरस्टैंडिंग होती है, शेयरिंग होती है, that family is definitely very successful. And your family can also be successful, your office can be successful. And you know something, कि कहते हैं ना गुलाब का फूल अच्छा लगता है जब फूल होता है वहां पे, खाली कांटे होंगे तो आई डोंट नो किस तरीके से वो गुलाब का फूल कहलाएगा. सो हम लोग गुलाब के फूल हैं आपके लाइफ में. क्या फायदा गुलदस्ते लेकर ऑफिस के टेबल पे रखना. The women are so beautiful, they're so courteous, they're so patient. एंड हमारे अंदर है ये काबिलियत कि हम काम कर सकते हैं, हम प्रेशर ले सकते हैं. ये सिर्फ है कि आप लोग हम लोग को आगे बढ़ने नहीं देते हो. हम लोग क्या नहीं कर सकते. आई विल गिव माई ओन एग्जाम्पल. आई डोंट हैव अ मेड, आई डोंट हैव अ ड्राइवर. कोई सफाई वाला नहीं है, कोई कुछ नहीं है. मैं सब कुछ खुद करती हूँ और उसके बावजूद मैं बिजनेस भी चला रही हूँ. और इन नो वे कि मैंने बच्चों को इग्नोर किया है या फैमिली को निग्लेक्ट किया है. But it's because I could talk to my partner and we could make us something positive. I could move forward. But it was not something. We don't need permission from the men. Because we are equal. हम कोई नौकरानी नहीं है घर में कि भाई इजाजत लेना पड़ेगा. वो आपकी हिस्सेदार है, आपकी बच्चे की माँ है, आपकी बीवी है. तो शादी क्यों किया था उससे? शादी करने की जरूरत नहीं है. We are good enough without getting married, we women. We are very capable, I'll tell you. एक कहानी बताओ कि एक ऑफिस में एक आदमी था, राइट, और उसकी तरक्की हुई तो उसको प्राइवेट अपना रूम मिला था, तो बड़ा ये खुश था. तो उसने आगे कॉल किया और पूछा कि एचआर से कि क्या अभी मेरा अपना कमरा में डेकोरेट कर सकता हूँ. मैसेज भेजा, राधा ईमेल. तो पता नहीं चला उनको कि उसका नाम ऐसा लाइक मिक्स जेंडर का था. तो ही कुड नॉट मेक आउट वेदर इट वाज अ मेल और अ फीमेल. तो वापस ईमेल में आया कि इट डिपेंड्स व्हाट इज योर जेंडर, देन वी कैन टेल यू हाउ यू कैन डेकोरेट योर रूम. क्योंकि अगर आप मर्द हो और आप अपने फैमिली के फोटोज डालते हो तो ये शो होगा क्लाइंट्स को कि यू आर अ वेरी लविंग रिस्पॉन्सिबल मैन. देखिए अगर आप औरत हो और आप डालते तो लगता है कि आप कमजोर है क्योंकि आपको तो भागना पड़ेगा फैमिली के तरफ. वेयर इज द इक्वालिटी? क्यों ओनली मेन आर केयरिंग वेयर एज विमेन? आई विल टेल यू कि अगर उनको इवन 104 बुखार हो और बच्चा बीमार है, वो उठेगी, वो माँ करेगी जो भी हो. unless she's on the deathbed, she will not be able to move and help her child. Otherwise, never ever I have seen a woman, and I will stand for this. And this is where women need to be strong and committed. In two countries, one is Rwanda and Iceland, वहां पे औरतों ने अपनी आवाज उठाई थी. और अभी that those are the two countries in the world that is giving equality in the payments to men and women, same, no difference.
And from that time, all, like you saw, Hillary Clinton and all other women in different countries have been taking very senior posts. Those days are gone. पहले तो हाँ, पुराने जमाने में नॉट ओनली पाकिस्तान में, हाँ सारे दुनिया में ही ऐसा था, एक दिमाग में है कि भाई माँ जन्म देती है तो उसी ने बच्चे को संभालना है। बाकी जो बच्चा अगर सिर्फ माँ से पलेगा, आई एम सॉरी, वो बच्चा सही नहीं पलेगा, Very गैप true. वैक्यूम होगा। इसीलिए अगर यस माँ ने, नॉट विथ मेड्स, एक तो माँ ने पालना है बल्कि बाप का होना लाजमी है। एक लड़की क्या सीखती है एक मर्द के बारे में? पहला मर्द कौन होते हैं उसकी लाइफ में? उसके पापा, फिर उसके भाई। अगर उसका पापा के पास टाइम नहीं है या वो अपने उसकी माँ को मारता है या गालियां दे रहे हैं या रिस्पेक्ट नहीं करता, उसके दिमाग में क्या आइडिया आएगा कि सारे मर्द ऐसे हैं? सो मेन, आई रिक्वेस्ट यू कि जागो, उठो, देखो, आपके बच्चे को आपकी जरूरत है। एंड बिसाइड्स बीइंग अ बिजनेस एंड अ लीडरशिप कोच, आई एम अ काउंसलर and I'm dealing with trauma, teen abuse, children abuse, family problems, and women's well-being. And I will tell you very clearly, the the absence of a father is really affecting the kids. So men must really make sure to give their time to cut out their activity. और बस करो, मीनिंग आप लोगों को बस हर वक्त शादी के बाद भी दोस्तों में जाना है, ये करना है, वो करना है। क्यों हम लोग औरतों का कोई लाइफ नहीं है? उनका दिल नहीं करता किसी से बात करने के लिए? वाई नॉट हैव अ बैलेंस? कि कभी वाइफ को जाने दो, आप संभालो बच्चों को फॉर चेंज। इतना अच्छा होगा कि बच्चा कभी पापा से के साथ हो, कभी मामा के साथ हो। तो इट इज सच अ गुड बैलेंस। एंड हु आर यू हेल्पिंग? यू हेल्पिंग योर ओन फैमिली, क्योंकि जब आप ड्यूटी पे जाओगे तो वाइफ भी होती है वहां पे। इन सम कंट्रीज लाइक आइसलैंड, दे हैव आल्सो स्टार्टेड पैटर्निटी लीव। पता नहीं अगर आप लोगों ने सुना है, बहुत अच्छा है, क्योंकि स्लोली जैसे औरतें आ रही थी काम पे, तो आइसलैंड में स्टार्ट किया था कि 3 months and 6 months maternity leave they'll give mothers, which was very good. And in a lot of countries it is that maternity leave is given. और फिर उन्होंने स्टार्ट किया था कि भाई मर्दों को भी देना चाहिए, and keep a condition for them also. And many men found that very nice, and they felt less pressurized than being forced to go to work. So why can't we do this? By Yes, men this being is at a home very and good looking after message kids. for all the husbands, fathers and brothers. सबके लिए, घर में जो भी मर्द हैं उनके लिए एक बड़ा अच्छा रेफरी ने हमें मैसेज दिया है कि प्लीज सपोर्ट योर फीमेल्स एट होम। आपको ये नहीं पता कि आपके सिर्फ जस्ट एक जो है उन वर्ड कहने से कि यू कैन डू इट, सिर्फ आप अगर उनको ये कह दें तो वो घर का भी संभाल लेंगी, वो बाहर का भी संभाल लेंगी। ठीक है, वो यू कैन नॉट इमेजिन दैट हाउ मच वंडर्स अ फीमेल कैन डू, वो कितनी वर्सेटाइल होती हैं, यू कैन नॉट इमेजिन दैट। आप उनको सिर्फ ये कह के देख लें कि यू कैन डू इट। और आपने जैसे ही कहा कि ये बहुत ज़रूरी है कि एक बैलेंस जो है वो बैलेंस कर लें, थोड़ा सा अपने वाइफ को सपोर्ट कर लें। इफ शी इज अनमैरिड तो फादर्स हैं, ब्रदर्स हैं, थोड़ा सा काम अगर आप खुद भी उठ के कर लेंगे, किचन में भी इवन चले जाएंगे तो कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं, घर की बात घर में ही रहती है। एक दूसरे को सपोर्ट करने से आप लोग मिल के ज्यादा अच्छा ग्रो कर सकते हैं। एंड फॉर डूइंग योर हाउस होल्ड वर्क, इफ यू बोथ आर अर्निंग, यू कैन हायर अ मेड। आप एक मेड रख सकते हैं जिससे आप अपने घर का सारा काम करवा सकते हैं, तो आपके बच्चे भी ग्रो करेंगे। एंड वन थिंग आई वांट टू आस्क फ्रॉम यू कि वो फीमेल्स, ये जो हमारा एक माइंडसेट बना हुआ है कि दोस्त हु आर वर्किंग वुमेन, उनके बच्चे इग्नोर होते हैं और वो अच्छे अच्छे तरीके से वो नहीं ग्रो कर पा रहे होते, तो इस माइंडसेट के बारे में आप क्या कहेंगी कि वो फीमेल्स जो अपने कैरियर को भी परस्यू कर रही हैं, उनके बच्चों में और एक घर में रहने वाली जो फीमेल है उनके बच्चों में क्या डिफरेंस आता है? वेरी गुड क्वेश्चन उस्मा। बात ये है कि हर चीज में लाइफ में यू हैव टू हैव अ बैलेंस। Without a balance, you will be unsuccessful, whether you're talking about health, your job, or anything in life. ठीक है? Like in English, they say, na,
If you are playing all the time and not studying, you will be a dull person. So you need, खेल कूद भी जरूरी है, पढ़ाई भी जरूरी है. The same way, even if you are working, you'll need to have a balance. Why is this taboo that a working mother neglects her children? क्योंकि वो देर देर तक अगर काम पे बैठ रही है तो हाउ इज थिंग्स, द बॉस इज गोइंग ऑन गिविंग हर वर्क, वो 9-10 बजे आ रही है तो बच्चे कहाँ पे. नौकरियों का इतना अच्छा टाइमिंग्स और द डिफरेंट जॉब्स, यू सी व्हाट सूट्स यू. If you have very small children, you can also work in a school or take a half day job. That's the benefit of having, you can adjust, look for the kind of job that suits with your children and your family. अगर बच्चा आफ्टरनून शिफ्ट में जा रहा है, उस टाइम का कोई जॉब आप लोग ले लें. And in the beginning only, and stop being the people's pleaser. ये प्रॉब्लम है कि हम कोशिश करते हैं जस्ट टू मेक द बॉस हैप्पी, कि एक काम करना है, हम लोग 20 काम करने के चक्कर में होते हैं कि नहीं नहीं यार शायद तरक्की मिलेगी. अरे कोई तरक्की नहीं मिलने वाली है जब तक बॉस का दिमाग चेंज नहीं होगा. एंड यू आर निग्लेक्टिंग, योर बर्निंग आउट एंड योर मेकिंग योर फैमिली टू सफर. ये सवाल पूछे, मैं किसके लिए कमा रहा हूं, मैं क्यों कर रहा हूं ये जॉब. When you sit down and you ask yourself, don't just give this, ठीक है, like normally parents many times come, especially the fathers, I've heard this commonly saying, oh मैं तो आप लोगों के लिए कमा रहा हूं ताकि बच्चे अच्छे पले, अच्छी पढ़ाई करें. No doubt we need money and good education, but again that vacuum is there. अगर पापा नहीं होता है लाइफ में या माँ नहीं होती है, there is no use of your games. For your child, you might buy the best of games, best videos, best clothes, and give them everything in the world. बल्कि अंदर से आपका बच्चा खोखला है. जैसे आपने जिक्र किया about keeping mates. Okay, it's a nice job, but decide that. Don't forget the child is yours. The child is not the maid's child. जिस दिन आप इग्नोर करते हो, जैसे मैंने काफी देखा है जहाँ पे फैमिलीज होती है दूसरे मुल्कों में, यू नो वेयर दे कमिंग फ्रॉम द जॉब, मियाँ बीवी चलो एक साथ ही मिलके वो जा रहे हैं डिस्को क्लब में, कोई पार्टी में, इधर उधर, बच्चे ठीक है मेड के साथ है. कैसे पलेगा? Why is the life becoming so bad? आप देखें कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी हमारे माँ बाप और बाप दादे को, आजकल न्यू जनरेशन मुश्किल से अगर वो 6 महीने भी एक साथ रहे विद मियाँ या बीवी, बड़ी बात है. उनको तो सोने का तंगा दे दो, बिकॉज इट इज नॉट, दे कैन नॉट क्लिक, दे डोंट वांट टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज. Marriage comes with responsibilities. First of all, you'll force people on marriage. That's the biggest problem. कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है मियाँ बीवी के पास. खास तौर पे लड़कियों को मैंने देखा है, they are pushed to marry a certain boy. Yes, it's good that he's got money and everything, but what's the use if he gives money and he's going to another बीवी somewhere else or girlfriend? क्या आप ये चाहते हो कि आप लोगों की बेटियों के साथ हो? और बेटी से पूछो भी. Second biggest problem, I will tell you what happens is, the girl is exposed to her father and her brother. She studies in girls' school. She is not allowed outside at all. कि नहीं जाना है, because the men have made, sometimes some men have made are like monsters, made the environment very scary. So we are protecting the women. How do you want her to go and live with a man suddenly? And to love a man who, when she is being told stay away from men, one day आप कहते हो कि अच्छा आपकी इस तारीख को शादी हो रही है और रुखसती हो रही है, आपने उस आदमी के साथ रहना है. It's not going to click. It's not going to click. And always the opinion of the person you're getting married is important. Even अगर लड़की हो, क्यों दबा के रखा है कि लड़की नहीं बोल सकती है, उसकी आवाज सुननी नहीं चाहिए, उसकी हंसी भी नहीं निकलनी चाहिए. ये घर से होती है. It's not that you go out of the house and then you say that in the job place we are not getting place, or क्यों they cannot take leadership positions. What are you giving your daughter? From the house, are you letting her to decide? Even खाने में क्या होता है,
पता चले मर्दों को पसंद नहीं है कोई एक किस्म का खाना चटपटा या इमली के साथ, ये क्या क्यों बनाया, ये खाना नहीं चाहिए, पकड़ के बाहर फेंक देते हैं। वाई? हम लोग कोई जानवर हैं औरतें? नो, ना ही हम लोग नौकरानियां हैं। Respect us, see what we also feel and share. The sharing is very important, the communication कि यार मुझे पसंद नहीं आ रहा ये खाना, कुछ कर सकते, ये ऐसे कर लो कि लंच में आप बना रहे हो सालन जो मुझे पसंद है, ठीक है, वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा बना लेना, ताकि जब आपका मूड हो तो आप भी अपना थोड़ा सा साइड में लेकर अपनी चीज भी बना लो। A woman wants to be loved. She should be treated as the queen of your heart. When you respect, जैसे उस्मा ने ऑलरेडी जिक्र की कि when we love the woman, we tell her that you are good, you are capable. You tell me कि हम लोग सिर्फ में शायद जब हम शुरू जब प्यार का स्टोरी चलता है, लव स्टोरी, हम लोग कहते हैं कि मर्द भी कहेंगे डार्लिंग आई लव यू, आप तो इतनी खूबसूरत हो, इतनी अच्छी लिपस्टिक डाली है, बाल कितने अच्छे हैं, आपकी आंखों को देखो, फला डिमका, ये सारी प्यार की बातें होती। जैसे शादी होती है, ये कभी भी आप लोग नहीं कहते हो यू आर ब्यूटिफुल, आई लव यू, यू आर माई स्वीट हार्ट। क्यों? व्हाट्स रॉन्ग? और नो डाउट कि हमारी औरतें इतनी काम करती हैं इन पाकिस्तान, आई विल टेल यू, कि जब वो जन्म देती है बच्चे को, उसके बाद शी डज नॉट केयर फॉर हर सेल्फ, जिसके वजह से आपको पाकिस्तान मैप नजर आएगा या कुंडी पॉट नजर आएगा या मटका नजर आएगा। You cannot blame her. A woman is so loving. Have you cared? It's easy to say, अरे देखो कितनी मोटी हो गई हो अभी, मैंने तो इतनी पतली कमर 24 कमर वाली औरत से शादी की थी, और अभी देखो तो 52 इंच की तो कमर है। आपने कितना आराम उसको दिया है। क्या जब बच्चा रो रहा था आप भी ले सकते थे गोद में। यू कैन ऑल्सो मूव, लेट हर वर्क, लेट हर गो इन फ्रंट। इट स्टार्ट्स विथ यू मेन, स्टार्टिंग इट विथ द होम, start it at the home. When you make them confident, that is when they will be strong and not be suppressed by men. And I will tell you, I myself have experienced this from my father. He always encouraged me, he supported me, he supported my mother. मेरी माँ एक वकील थी, 11 साल बलूचिस्तान में और 33 years in Sindh. But she had the full support of my father to study. She studied after marriage, made herself with the children. We were born, I still remember my mother studying law. She never neglected us. And those who are from Quetta definitely know कि वहां पे जैसे घर होते, सामने कमरा होता है, फिर कंपाउंड होता है पीछे, because of पर्दा and all, the family is in the house at the back. मेरी माँ का दफ्तर was in the front guest room, and we could go and approach her and see her, and she would come and see us. And it's something beautiful even here in nowadays we are having that freelancing opportunity. Yes, that's also a very good opportunity. We can do the freelancing work, and उसमें आपके पास आवर्स आपके पास हैं, 3 to 4 hours भी अगर आप काम करना चाहें पूरे दिन में। क्या हम अपनी फीमेल को 3 to 4 hours स्पेयर नहीं कर सकते बच्चों के और घरों के काम से? 3 to 4 hours में वो आपसे भी ज्यादा अर्निंग कर सकती हैं और अपने घर में बैठ के कर सकती हैं। देयर इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी कि अगर थोड़ी सी भी आपके अंदर आईटी स्किल्स हैं तो यू कैन डू द फ्रीलांसिंग। देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल दीज डेज। तो ये तो बड़ी अच्छी ऑप्शन है कि दोज हु आर रिस्ट्रिक्टिंग देयर फीमेल्स टू गो आउटसाइड, दे हैव they should give them time to 3 to 4 hours for doing their work। थोड़ा सा उनको टाइम दे दें। और जैसे कि आपने कहा कि what I feel is कि ये हमारा स्टार्ट होता है फ्रॉम वेरी अर्ली चाइल्डहुड, जब एक बच्चा और एक बच्ची में डिफरेंस किया जाता है, और ये वो मदर हैं जो स्टार्ट करती हैं ये डिफरेंस when she is distributing the work or when she is calling her daughter to bring something। आपने देखा होगा कि वो अक्सर अपने बेटे को नहीं बुला के कहती कि भाई मुझे पानी दे दो या खाना बना दो या चलो आज तुम चाय बना दो। चाय बनाना या कुकिंग करना व्हाई नॉट अ मैन कैन डू। ठीक है, वो वहां से स्टार्ट से आप अगर उस बच्चे से छोटे छोटे घर के काम करवाना शुरू करें तो वो वहीं से अपनी
सिस्टर को जो है वो अपने बराबर समझेगा, और वही बच्चा जब बड़ा होगा तो वो अपनी वाइफ को भी जो है उसी तरह की रिस्पेक्ट देगा, जैसा कि उसकी मदर ने बचपन में उससे अपनी सिस्टर की रिस्पेक्ट करवाई थी. So जी. what do you say about this? Very true, very true. And I put a thought into the men's mind, okay, and really think about this. That जैसे आप लोग सपोर्ट नहीं करते, one thing was a very nice thing that you said, जैसे बेटे को बोलना कि चाय बनाना या कुछ करना वो बचपन से ही स्टार्ट करें, बिकॉज वहां से ही लड़का सीखता है एहतराम एक औरत का, इज्जत कैसे करना, क्या करना, एंड स्टार्ट्स विद योर सिस्टर्स, राइट. बट मैन यू ऑल्सो थिंक अबाउट दिस, अगर आप औरत को मौका नहीं देते हो कुछ करने के लिए, जब हम लोग कुछ करते हैं जो हम लोग को पसंद है, we are happy and there are positive energies that come out, due to which we are not stressed and we are not depressed. Two things. Secondly, look at it, you do not like to let your woman go out. ठीक है, एक तो अगर पर्दा नशीन है, घर से भी वो काम कर सकती हैं, right? And you must trust your woman. I will tell you, if you take good care of your wife, even if 10 men stand in front of her, a woman is not so gira hua that she's going to run after another man. You all have these weird thoughts and you all are scared that, oh, women will, cannot be trusted. I'm sorry, women can very much be trusted. So you have to take care. If you want us to trust you, you need to trust us. Besides this, if something happens to you, where do your kids go and your wife? अगर दोनों काम करें, हेल्प होता है. आपकी जॉब छूट गई, उसमें भी हेल्प. अगर खुदा ना खास्ता के ऊपर वाले ने आपको बुला लिया, टिकट भेज दिया, तो आपको जाना है, एटलीस्ट अगर वो काम कर रही है, शी कैन कंटिन्यू एजुकेटिंग योर चिल्ड्रन. रिमेंबर, दे आर योर चिल्ड्रन. और ये भी प्रॉब्लम है कि कभी हम लोग नॉर्मली मर्द कहते हैं कि भाई हमारा नाम आगे ले जाने वाला लड़का है. But I will tell you, in English, the saying is, son is a son until he has a wife, but a daughter is a daughter for the rest of her life. बेटी कभी माँ बाप को छोड़ती नहीं है, उसका ख्याल रखो. ऑलवेज हर घर में बेटी पलट के आएगी पूछने के लिए. बेटा के तो बीवी मिल गई तो वो गया काम से. In many families this is happening. So this bonding, it's all where you see some men not doing it, some women not doing some things. It's because it's all the parvarish of everyone. And even like you're saying about this, the mother, I would not put the blame on the mother only, Uzma, that कि वो सिखाए, वो difference बनाती है. सबसे पहले रोल मॉडल क्या है? आजकल के बच्चे को अगर आपने नोट किया है, वो टीवी से कितना सीखते हैं, right? So that means by looking, they observe, they learn more. तो बाप क्या रोल मॉडल शो कर रहा है? क्या बाप प्लेट उठाता है? क्या वो बीवी के लिए कभी पानी लेकर आएगा, या कहेगा चलो यार मुझे नहीं आता, सिखा दो चाय कैसे बनाते हैं, या कुछ करता हूं. So you fathers have to make that change also for your sons. मोस्टली यही होता है कि यार बेटा है, जाने दो, करने दो. ये अगर मस्ती भी कर रहा है तो इट्स ओके बेटी को डांटना. छोटे बच्ची को तो आप लोग बिठाते हो रोटियां बनाने के लिए. Be a little balanced, have a unity in the family to understand. And as I said, the girl has her first experience of a man of seeing her father. And सारे वालिद साहब यही चाहते कि मेरी बेटी किसी अच्छे घर में जाए, उसकी इज्जत हो. सबसे पहले आपने उसकी माँ की तो इज्जत की नहीं है, तो उसने देखा है कि भाई मैंने तो गुलाम ही बन के रहना है जब मैं शादी करूं, तो वो गुलामी में ही बैठ जाती है. To encourage them, there are lots of jobs, and this is what I'm doing when I speak about business and leadership coaching. कि औरत ऑलरेडी लीडर है बिजनेस में, ऑलरेडी घर ही की डिपार्टमेंट्स को हैंडल करती है. Let her start some business. She is very capable. She can cook, she can stitch, she can babysit. और क्या डरते हो यार, आजकल तो इवन जैसे कंप्यूटर के साथ यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम द हाउस. अभी भी आई एम श्योर उस्मा घर में बैठी है, बल्कि शी इज इन कॉन्टैक्ट विथ मी. एंड इफ यू डोंट ट्रस्ट योर वुमन, yet you all want
to be trusted men. It's okay जब आप औरतों से बात करते हो बाहर, जब आप लोग घर पे, फिर आप बोलोगे नहीं काम से बात हो रही थी इस औरत से, या अगर आप दुकान वाले हो तो आप बोले वो तो सौदा लेने आई थी। तो बीवी को फीलिंग्स नहीं है, राइट? आप क्या सब सारी औरतों से बात करते रहो कि बीवी एक भी मर्द से बात नहीं कर सकती है। Give the power to your women. Encourage them. And as I told you, always say to them that you are beautiful. I love you. You are very pretty. We want to hear these things. Yes, we do not. Even I was not the size I am now. That's why we have very less of Go ahead, Uzma. इसीलिए हमारी बहुत ही कम फीमेल्स हैं जो सोशल मीडिया पे भी आ रही हैं। गिन चुन के अगर आप देखें तो कोई बहुत ही कम, स्पेशली फ्रॉम पाकिस्तान, इफ यू कैन सी कैमरा शाइनेस, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, द फीमेल्स आर नॉट कंफर्टेबल टू टॉक टू एनीवन। सो ये कम्युनिकेशन प्रॉब्लम सारी इसी वजह से आ रही हैं कि ये वो दबाव है, ये वो प्रेशर है जो स्टार्ट में ही हमने घर में फीमेल के ऊपर रखा हुआ है, जिसकी वजह से वो खुल के कैमरा के सामने नहीं आ सकती। देयर आर लॉट ऑफ गुड पॉजिटिव पीपल ऑन द सोशल मीडिया टू whom you can interact with, you can communicate with, and communication so you can get a lot of opportunities, that you can do a lot of work at home. There are a lot of platforms. So अगर आप FB के ऊपर भी देखें, फेसबुक पे देखें, इंस्टाग्राम पे देखें, तो आपको फीमेल्स बहुत कम नजर आएंगी। So this is a very good message from Daphne that please come on the social media, do communicate with each other, और इस चीज का fear आप बिल्कुल निकाल दें। Get out of this fear के there are only the negative people on the social media. There are a lot of good people जिनसे आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, और उनके साथ कम्युनिकेट करने से यू विल गेट द कॉन्फिडेंस, और इससे आप जो है वो you can start by communicating, you can start your earning, you can get a lot of opportunities. So thank you so much Daphne, मैंने आपका बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया। The last question that I want to ask from you कि what are the advantages of pursuing your career? वो फीमेल्स जो अपना कैरियर परस्यू कर लेती हैं, जो जिनके छोटे किड्स हैं, विद स्मॉल किड्स में भी थोड़ा सा टाइम होता है जो मुश्किल होता है, फिर बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो आप थोड़ा थोड़ा टाइम स्टार्ट से ही देना शुरू करें। डू वर्क ऑन योर पर्सनल डेवलपमेंट। आप घर बैठ के, देयर आर लॉट ऑफ ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल। अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। आप वो जो है, देयर आर लॉट ऑफ कोचेस लाइक दैट इज आल्सो अवेलेबल। यू कैन रीच हर विद डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, जिनके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिए हैं। You can get a lot of information from her. आप उनसे कोचिंग ले सकते हैं। इसी तरह से डिफरेंट और भी कोचेज अवेलेबल हैं जिनसे आप अपनी पर्सनल डेवलपमेंट कर सकते हैं। और फिर जब आहिस्ता आहिस्ता आपके बच्चे बड़े हो जाएंगे, देन यू विल गेट द टाइम, तो तब तक आप काफी पॉलिश हो चुकी होंगी, काफी आपके अंदर स्किल्स डेवलप हो चुकी होंगी, तो देन आप यू कैन गिव द मोर टाइम टू योर जॉब्स। यस। तो जी डेफिनेटली लास्ट जो मैंने आपसे ये पूछना चाह रही थी कि व्हाट आर द एडवांटेजेस, वैसे तो मैंने खुद ही बता दिए, लेकिन आप भी एक दफा बता दें। You start early, but then when you have small children, you plan it according to your schedule, right? Because one benefit is, especially I would say if you're doing your own business or freelancing, you can do it at the time that suits you and your child. काफी टाइम के बाद जैसे बच्चा बड़ा होता जा रहा है, आपके माँ को समझ आ ही जाती है कि यार ये इसी टाइम पे सोएगा, ये करेगा, वो करेगा। द मेन क्रूशियल इयर्स आर till the child is about say 3, if you send him to nursery, क्योंकि 3+ नर्सरी में बच्चा चला जाता है, तो पहले 3 साल तो वो होता है थोड़ा सा भागना पड़ता है ये वो, बल्कि जब बच्चा सो रहा है उस वक्त आप कॉल्स करें, आप अपना काम करें, पढ़ाई जारी रखें। जैसे मैंने भी यही किया था कि मैंने भी अपनी पढ़ाई जारी रखती थी कंप्यूटर पे ऑनलाइन। बच्चा सो रहा है, विद सब देयर इज अ लॉट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ इवन स्टडीज इन डिफरेंट प्लेसेस। कई के होते हैं कि यही टाइम पे आपको पढ़ना है, कि सम गिव यू कि आप खुद ही पढ़े और वो आंसर सब कुछ दे दे। यू हैव टू सी व्हाट सूट्स योर कैपेबिलिटीज, डू अ लॉट ऑफ रिसर्च, राइट? एंड women, I would say strongly, be strong in your personality. And I want to share this very personal with you because I want you all to feel and hear what I am saying.
Now, as you can see, I am not some bachi of 20 years. Okay, I'm much older. I've also moved into business, and I started small, then I started counseling as the children grew big. One thing, get your children involved. बच्चों को बहुत पसंद आता है कि हम हेल्प करें, हम कुछ करें मामा मम्मी के लिए, ठीक है। अभी ये फायदा है, आई वुड से थैंक गॉड फॉर द पैंडेमिक, कि पैंडेमिक में सब लोग घर पे बैठे हैं, बच्चे स्कूल का भी पढ़ाई सब कुछ कर रहे हैं घर से, ठीक है। नो डाउट नाउ इट्स वेकेशंस, सो बिकॉज ऑफ दिस पीपल हैव अंडरस्टूड द प्रॉब्लम्स ऑफ फैमिलीज, बिकॉज आदमी के साथ भी क्या प्रॉब्लम हुआ, वो भी ऑफिस नहीं जा सकता था, वो भी लैपटॉप के साथ घर में बैठा है। कई घरों में सिर्फ एक ही कमरा होता है, सो पीपल हैव गॉट यूज टू दैट अ लॉट ऑफ थिंग्स। लाइक पहले आपको बिल्कुल प्रोफेशनल होता ना था, कैमरा के ऊपर यू हैव टू हैव अ प्रॉपर डेस्क, ये वो। नाउ द वर्ल्ड हैज बिकम वेरी फ्लेक्सिबल इन दीज थिंग्स, राइट? सो गेट द चिल्ड्रन इन्वॉल्व। लाइक आई गिव यू एन एग्जाम्पल, मेरा जो बिजनेस का नाम है कैरोसेल मम्स, ये मेरी बेटी ने नाम बनाया है। इवन लोगो की जो डिजाइनिंग, कलर, हर चीज बेटी का है। बेटा पेपर वर्क में भी हेल्प करता है, कुछ प्रूफ रीडिंग में कहती हो चाहिए चेक करो, ये डिजाइन करना है, राइट? वन थिंग व्हाट आई हैव नोटिस्ड व्हेन आई एम कोचिंग यंग मदर्स, आप लोग अपने बच्चे को डांटते हो जब आप कुछ कर रहे हो, प्लीज डू नॉट डू दिस, क्योंकि बच्चे को जितना आप कहते हो, जैसे जब मैंने कैमरा पे देखा है, अभी सपोज उस्मा की छोटा एक बाबा होता, चले जाओ यहां से, हटो, हट जाओ जो दूसरे कमरे में, बच्चा और तंग करेगा आपको। अगर मैं आप इसीलिए सुला के आई हूँ। आपने तो सुलाया, बल्कि अगर बच्चा आता तो आप कहें अच्छा ओके इधर आओ, ओके सलाम करो, अच्छा अभी आओ, चलो भागो, या उसको गोद पे बिठा के गिव देम अ कलर पेंसिल एंड ड्राइंग बुक अगर बच्चा बहुत छोटा है। रिमेंबर द वर्ल्ड नोज दैट वी आर मदर्स एंड वी हैव चिल्ड्रन, कि ये है कि बच्चा देन कम्स इनटू वो जिद्दी मोड, they kick a tantrum and they make more hell when you push them, because I've seen many of them, the mothers are pushing them, the child will go pull something, या उसका सर कहीं लगेगा और फिर पूरा वो तूफान ही आ जाता है कि माँ चिल्ला रही है, वो भी पागल। अगर बच्चे को कलर पेंसिल दे दिया और बोला कि अच्छा इधर बैठो, ओके आई एम डूइंग समथिंग, आप खेलो। ये फायदा ये है अभी माओ के लिए कि पहले जैसे इवन विद माय क्लाइंट्स, अगर मैं कहीं मिलती या उनको मेरे ऑफिस में आना होता था, काफी मुश्किल होता है एक बच्चे को कंट्रोल करना अगर छोटा है। अभी फायदा ये कि ऑन द कंप्यूटर, जैसे अभी उज़मा भी सुला चुकी है, वो बच्चा अपने बेड पे सोया है, सो ही इज कंफर्टेबल विद हिज टॉयज, राइट? बल्कि अगर आप किसी अभी रेस्टोरेंट में बैठते मेरे साथ ऑफिशियल मीटिंग के लिए, तो आप सोचो बच्चा कितने देर तक आप गोद में पकड़े रहोगे। It is so difficult. So, mothers, you look at your timings and plan it. You can do something, right? Men, please respect us women. Enough is enough. आपको जिंदगी जो खुदा ने दी है माँ के जरिए, एक औरत के जरिए, उनकी इज्जत करें। I am quite sometimes, I tell you, I am disgusted because I do get messages now with these interviews. I'm getting a lot of messages. And as you said, अच्छे भी लोग हैं. I'll tell you, मेरा सबसे पहले मैसेज आता है लोगों के पास, hi, you've sent a friend request. How may I help you? फिर वो कहते मैं तो पाकिस्तान से हूँ, आपको आपसे दोस्ती करनी है, ये वो, फिर मैं आगे सवाल पूछती हूँ। Come on, now look at my age. मैं आपकी माँ होने के लायक हूँ और आप लोग मतलब है मुझे अजीब से मैसेजेस भेज रहे हैं कि आप अच्छी लगी हमें, वी लव यू। वेल आई डोंट लव माई सेल्फ, दैट्स द वे आई एम, because I will give silly answers if you ask me stupid things, and I've warned you very clearly, many people, if you want to talk to me properly, it's fine, I will respect you and I will friend you, but if you cannot behave, I'm in 2 minutes blocking you. Allah Hafiz, enjoy yourself. So men, you need that is a very good opportunity to block it. ये भी अक्सर fear होता है females को, तो you just told it, that is a very easy thing to just block it, और आप delete कर सकते हो जो friend request जिसने भी भेजी हुई है, if he is abusing you, ठीक है। तो इसमें कोई इतना ज्यादा issue नहीं है, ये बड़ा fear होता है females में, that's why they are not coming on the social media कि हमें कोई ऐसे कह देगा और ऐसे कह देगा। Just on one click you can kick out that person.
And the best in blocking, Ozma, what you must have seen is that person cannot find you again on Facebook ever. Exactly. क्योंकि अगर आप मैसेज Exactly. डिलीट करते हो वो फिर भी आपको भेज सकते हैं. दे कैन कीप ऑन डिस्टर्बिंग यू. इनके पास काम नहीं है. कभी कभी कोई वो मैसेंजर पे कॉल करता ही रहेगा. बट आई एम वेरी क्लियर. I said not to do that. What's the purpose of your message? Otherwise, I am blocking you very clearly and immediately block the person. Okay, we women have to really command respect. And men, if you want respect, you command that respect and we will respect you very well. I'm seeing a message, Uzma, from Mr. Safdar Jam. He says the personality development of a child starts from the time too much before he comes to this human world. Yes, it does. And let me tell you this, even doctors will tell you this, that when a child is in the mother before birth, in those 9 months, अगर आप कोई गाना भी गाते हो, आप नोट करना चाहिए कि जब बच्चा पैदा होता है, अगर वो अपसेट है, वो रो रहा है, आप वो ही गाना गाओ तो द चाइल्ड इज starts calming down. So this is enough to tell you कि बच्चा जो माँ के पेट में होता है उसको सुनाई देता है. He is hearing and he is watching everything. So how are you treating the mother? How much are you loving her? How much are you wanting her? Is the child really wanted in this world? All these things go again into psychology of pre-birth, that whether the child was wanted or not wanted. Another thing that I've commonly seen amongst our people is that in Pakistan, first of all, when they come to know it's a girl, बड़ी उदासी होती है. लड़का होता है, ओ मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा नाम आगे लेकर जाएगा. जितना बेटी रखेगी ना आपका नाम आगे, you trust me. Even now I have lost my parents 6 years later, but till now you saw I speak about my father and my mother. Hats off. Her daughter will never forget. And God has made it that way, that creation should continue through a woman. So why the heck don't you all want a woman? Why don't you all love women? I don't understand what's your problem. So in other words, you're just telling God that he has made rubbish. God doesn't make anything bad or imperfect. God is perfect. He makes everything good. So when you do not respect a woman, that means you are not respecting Allah, in other words, because he made rubbish. In simple words, that's what you try to tell him. Okay, Over to you, Safdar James, thank you so much for your questions. And on this topic, I will try to invite directly in some other series as well, जहाँ पे हम ये discuss करेंगे how the women can involve their kids in different activities while they are doing their work, और अपने घर की environment वो कैसी बना लें कि बच्चे उसमें used to हो जाएं. And the second thing कि आप there are a lot of other things that are coming in mind that we will cover in the next series. Thank you. I took a lot of time from you. So thank you so much. Keep inspiring, keep empowering all the women in the whole world. Thank you so much. Definitely, together we can do it. And any women in this audience, come forward. And men, we are there to support even your women. So bring it on, all men. Send it in the messages. I'm sure Uzma will still be looking at her messages, and she will do her best to make sure that we can plan something else, or she'll bring some other women to speak on it. But we will make it happen. We will help you out. Okay, thank you so much. Allah Hafiz. Allah Hafiz, Pakistan Zindabad.